Hello students, in last video we already studied about from page number 1 to 6 and today I will start page number 7. Fisherman can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. Now fishermen feel the wind and look at the sun and they decide where they want to go. Many of us would get lost and not be able to find out our way on the sea where you only see water and nothing else. हमारे जैसे लोग तो गुम ही हो जाएंगे और चारों तरफ क्या दिखाई देगा, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा. Now find out, look at the sun and find out the direction from where it rises. हमें देखना है कि सन कौन से डायरेक्शन से राइज होता है. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? Sun rises from the east. Now there is a second question, from where you are, what interesting things do you see to your east? So I see a rising sun to east and see red orange sky in morning. Now name two things that are laying on your west. Now again such type of questions that we have to write in your own answer. That means आपके जो वेस्ट में है वो आपको क्या दिखाई देता है वो आपको लिखना है. तो मैंने यहाँ लिखा है टू थिंग्स विच आर ऑन माई वेस्ट आर सम बिल्डिंग्स एंड अ ट्री. नाउ देयर इज अनदर टॉपिक, what a catch. Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find good catch of fish. They are spread their nets. They will have to wait for many hours for the fish to come into the nest. Out on the sea, fishermen look place where they hope to find to go catch a fish. अब ये जो फिशरमैन होते हैं उनको एक होप रहती है, एक आशा रहती है कि अगर वो सी में जाते हैं तो उनको मछलियाँ अच्छी मछलियाँ मिले. दे आर स्प्रेड देयर नेट्स, वो अपना जाल बिछा देते हैं. दे विल हैव टू वेट फॉर मेनी आवर्स, वो घंटों तक इंतज़ार करते हैं कि उनके जाल में कोई मछली फंस जाए. लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स. तो यहाँ पे कुछ बोट्स दिए हुए हैं. देयर आर सम बोट दैट यू हैव टू फाइंड आउट. सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इनटू सी. अब जैसे जो मछुआरे होते हैं उनको कोई बोट्स में मोटर लगे हुए होते हैं कि जो बहुत दूर तक जा सकते हैं. सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, और बहुत दूर तक जाके बहुत ज़्यादा मछलियाँ वो पकड़ के ला सकते हैं. दीज बोट्स ट्रैवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर. ये जो बोट है, ये जो मोटर बोट है वो 1 आवर में 20 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर लेती है. और जिसका स्पीड होता दिस बोट्स ट्रैवल 20 किलोमीटर इन 1 आवर. नाउ देर आर टू क्वेश्चंस. हाउ फॉर वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर. यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है 1 आवर में 20 किलोमीटर जाते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इन 3.5 आवर हाउ मेनी डिस्टेंस ऑफ द मोटर बोट विल कवर एंड हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर. So what was our first question? How far would the motor boat go in 3.5 hours? We already given that distance traveled by motor boat in 1 hour is 20 kilometer. So 3 kilometer. So here 1 hour is given and we have to find out 3. At that time we will multiply. So 3 multiply 20 is 60 kilometer. Now again 1 hour is equal to 20 kilometer. Now 3 hours is fine. Now 1 hour is equal to 20 kilometer. 1 का हाफ हो जाएगा तो 20 का भी हाफ हो जाएगा. So half hour is equal to half multiply by 20. So 20 divided by 2 is 10 kilometer. So here 3 hour and half hour, that is 3 hour is 60 kilometer and half hour is 10 kilometer. So distance traveled by motor boat in 3.5 hour is equal to 60 plus 10, that means 70 kilometer. Now there is another question. How much time will they take to go 85 kilometer? Now we write here 85, that is 80 kilometer plus 5 kilometer. We know time taken to cover the distance 20 kilometer is in 1 hour. That means kilometer 20 kilometer is equal to 1 hour. So if many is given and we have to find out 1, at that time we will divide.
So 1 kilometer is equal to 1 upon 20. So same 80 kilometer is equal to 80 divided by 20. So 80 divided by 20 is equal to 4. Now one we know now 80 kilometer का तो निकल गया. Now what about 5 kilometer? So again 1 kilometer is equal to 1 upon 20 hour. But hour का अगर हम कन्वर्जन करें दैट मीन्स 60 मिनट. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 20. दैट मीन्स 20 1 जा 20 and 23 जा 60. So 1 kilometer can travel in 3 minutes. So 1 is no and we have to find out many, that is 5. At that time we will multiply. So 5 multiply 3 is 15 minutes. So time taken to cover 85 kilometer is 4 hour in 80 kilometer in 4 hour and 5 kilometer in 15 minutes. So the answer is 4 hour 15 minutes. Now there are some pictures: motorboat, long tail boat and big machine boat, that means trawler. But the fishermen are now very worried. अब जो fisherman है वो बहुत चिंतित हो गए हैं. There are some very big machine boats, that means trawler, in the business. They go far out and put their big nets deep in the sea. ये जो ट्रावलर्स है वो बहुत दूर तक जाके मछलियों का बहुत बड़ा लॉट वो क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं. Living very few near the sea shore, they also stay out on the sea for a many days. जो इस तरह से जो ट्रैवलर्स होते हैं वो बहुत दिनों तक समुद्र के बीच रहकर मछलियाँ पकड़ सकते हैं. These big machine boats also catch the small baby fish. ये जो ट्रैवलर्स जैसे मोटर बोट जैसे मशीन्स है वो छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेते हैं. विच दे येट टू ग्रो अप. अभी तक वो बड़ी ही नहीं हुई होती है, छोटी रहती है. But the fisherman in the smaller boat always let the baby fish pass through their net to go back into the sea. लेकिन जो छोटे मछुआरे होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, जो छोटी छोटी मछलियों को वापस जाने देते हैं क्योंकि उनको बढ़ना होता है. But they choose the net size in a such a way that only the grown up fish are caught. ये जो छोटे मछुआरे होते हैं वो अपना जाल ही इस तरह से चूज करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बड़ी मछलियाँ ही उसमें पकड़ में आ जाए और छोटी मछलियाँ वापस चली जाए. Now for hundreds of years fishermen have cared for the sea and its fishes and fished only a little to eat and sell. They say that if the travelers catch thousands of kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea. उनका कहना है कि अगर हम ऐसे ही बहुत लॉट पकड़ ले बहुत दूर तक जाके तो हम मछलियाँ तो समुद्र में मछलियाँ कम हो जाएगी कि ये बहुत डेंजरस है. सो राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर फेस बाय द fishes in our rivers and sea. So let us see what is the report. So the news report is there is a great danger of having a left with no fish in the sea due to trawlers catching thousands kilograms of whole lot of fish including the small baby fish which have yet to grow. The government should take care for the sea and its fishes by prohibition of the use of trawlers. यानी ये बहुत डेंजर है कि अगर इस तरह से अगर ट्राउलर अगर थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम पूरा मछलियाँ अगर पकड़ ले तो उसमें उस मछलियों में छोटी मछलियाँ भी होती है कि जो अभी तक बड़ी ही नहीं हुई है तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है. तो गवर्नमेंट शुड टेक केयर. तो गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं और ट्राउलर्स को रोका जा रहा है समुद्र में जाने के लिए. Now which boat gets how much? In one trip, the logboat brings about 20 kg of fish, but the other type of boats bring bigger catch as given in the table. The table also shows the speed of each type of boat, which is how far each boat goes in 1 hour. Look at the table and calculate. See, there are some types of boat
and these are the catches of fish. This is in one trip, and these are the speed. Now there is one question about how much fish in all, which type of boat bring 7 trip. Now type of boats are given and catch of fish in one trip is given, and we have to find out the 7 trip. We have to find out the 7 trip. One is given and the many we have to find out. At that time we will multiply each and every type. So for question number A is about how much fish in all will each type of boat bring in 7 trip. So here one trip is given and we have to find out the 7 trip. So one trip is given and we have to find out many. At that time we will multiply here. So each trip is multiplied by 7. Now question number B. How far can a motor boat go in a 6 hour? So motor boat go in 1 hour is equal to 20 kilometer according to that table. So motor boat go in 6 hour. 1 hour is given and we have to find out many. At that time we will multiply. So 6 multiplied 20 is 120 kilometer. Now question number C. If a long tail boat has to travel 60 kilometer, so how much long will it take? So speed of long tail boat is 12 kilometer per hour. Now we know speed is equal to distance upon time. Now we have to find out time, and distance is given and speed is given. So what is the formula? Time is equal to distance upon speed. So the formula is time is equal to distance upon speed. So distance is 60 kilometer and the speed is 12 kilometer per hour. So if we divide 60 by 12, so answer is 5 hour.